वेलकम स्टूडेंट्स, अर्क ट्यूटलेज के क्लासरूम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास को लेने जा रहे हैं जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को डिसाइड करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग स्क्वायर रूट को डिसाइड करेंगे। स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इट इज स्लाइटली से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर किसी नंबर का होता है, अगर हम लोग 4 का स्क्वायर पावर 2 को हम लोग 4 का स्क्वायर बोलते हैं, सो इट इज 4 into 4 दैट मीन्स 16। 7 स्क्वायर दैट मीन्स 7 into 7 is equals to 49। So these two numbers 16 and 49, these two numbers are called perfect square, right? तो जिसका स्क्वायर हो करके जिस किसी नंबर का स्क्वायर होने के बाद जो नंबर आता है दैट इज आवर परफेक्ट स्क्वायर। हम अपने सारे स्टूडेंट्स को, जैसे आप लोगों सारे लोगों को बताते हैं कि स्क्वायर्स में 1 to 20 का स्क्वायर आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, याद होना चाहिए, एंड 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब आप लोगों को याद होना चाहिए। ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे भी दूसरे चैप्टर्स में क्लास 10 तक आप लोगों को, और आगे साइंस की पढ़ाई कीजिएगा तो ये आप लोगों को हेल्पफुल होगा। स्क्वायर में हम लोग कुछ नंबर्स का स्क्वायर लेकर के अभी जैसे एग्जांपल में देखें, जैसे 44 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 44 into 44। ये तुम्हारा स्क्वायर हुआ। अभी हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर रूट फाउंड करने का दो तरीका होता है स्टूडेंट्स। वन इज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, prime factorization method, and second is by division method। राइट, अब हम कुछ एग्जांपल से आप लोगों को समझाएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर हम लोग नंबर लेते हैं 144, इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसा आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हैं, इस तरफ हमारा प्राइम नंबर्स होगा 272, then 236, then 218, then 2 9, then 3 and 3। अगर हम इन सारे फैक्टर्स को साथ में लिखे 2 into 2 into 2 into 2 42 and then 3 into 3, इन सारे का हम लोग हर एक 2 के पेयर के बदले एक हम लोग बाहर निकालेंगे, राइट। जैसे 2 दो 2 के बदले 1 2, दिस 2 पेयर के लिए एक 2 एंड दिस 3 का एक पेयर के लिए एक 3, तो ये हो गया 4 into 3 12। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12। इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसमें कभी कभी हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच वी कैन मल्टीप्लाई अ नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम लोगों को मान लीजिए किसी का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये नंबर मान लीजिए 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5। इस नंबर का हम लोग कौन से नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए। इसके लिए हम लोग देखेंगे दिस 2 is in pair, this 2 is in pair and this 3 and 5, these two numbers are not in pair। तो हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करते 1 3 से and 1 5 से, तो ये 3 भी पेयर में हो जाए और 5 भी पेयर में हो जाए। So this 15, 3 into 5, 15 is the least number by which if you multiply this number will get this number as a perfect square। इसी तरह से ये डिवीजन का भी सेम क्वेश्चन आता है कि कौन सा लिस्ट नंबर है जिससे हमको इफ यू डिवाइड दिस नंबर विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन द आंसर विल बी मोर और लेस सेम। ये नंबर था हमारा, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड कर सकते हैं 3 into 5। इनसे अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये 3 और ये 3 कट, ये 5 और ये 5 कट, देन भी ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से डिवीजन मेथड से और डिवीजन करके लिस्ट नंबर, व्हाट इज द लिस्ट नंबर बाय व्हिच वी कैन डिवाइड दिस टू नंबर और मल्टीप्लाई दिस टू नंबर सो दैट
वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर को पा सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। डिवीजन मेथड से हम लोग को करने के लिए अगर हम लोग नंबर ले लें 2, 3, 5, 7, 2, इनको अगर हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके लिए हम लोगों को पहले पेयर करना पड़ेगा। इस साइड इस तरफ से हम लोग पेयर करते हैं, 1 पेयर, सेकेंड पेयर और ये नेक्स्ट। अब इनको हम लोग को डिवाइड करना है ऐसे नंबर से कि ये डिवाइड हो सेम नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ 1 लेंगे तो हम लोग को 1 से 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 लेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा नहीं, 2 से सेम नंबर दोनों होना चाहिए। तो 2 से अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 4, लेकिन हमको 2 चाहिए इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों को क्या मिलेगा 1, इनको माइनस करेंगे तो 1, और ये दोनों पेयर को एक साथ उतारेंगे। इनको ध्यान में रखने के बाद ये दोनों नंबर को एक साथ उतारेंगे और ये जो नंबर 1 है विल ऐड 1 टू सेम नंबर हियर। सो 1 and 1 is 2 and now it is 135 here it is 2। सो 2 के बाद भी हम लोग ऐसा सेम नंबर डालेंगे जिनसे मल्टीप्लाई करने पर हमको 135 के नजदीक पहुंच सके। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग 2 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 5 is 25, carry 2, 10 and 2 12, 125। then 2 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 is 36, carry 3, 12 and 3 15, 156। now it is more than 135, so we have to take this 125, so we'll write 5 here and 5 here। so this will be 125, if we subtract this we'll get 10 and this 72 will come in, right। now यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, 5 लिए थे, we'll add 5 same number, add ना, so this will be 30। now here the number is 1072 and here it is 30, so take one number, जैसे if I take 3 and 3 here, if multiply 3 3 is 9, 0 and 9, 909। now if I take 3 0 4 and 4, 12 and 12, 12 is more than 10 12 72, so we'll take 3 here, so 3 here and 3 here, it will be 909 and subtract 3 6 and 163, so 163 is the remainder and 153। here comes what is the least number of 5 digits, what is the least number। suppose this is the example। now if I take one or two more examples of this, what is the least number of 4 digit, what is the least number of 4 digit which is a perfect square। least number of 4 digit which is a perfect square, we'll consider least number of 4 digit, this is the least number of 4 digit 1000, this is the smallest number of 4 digit, we'll find the square root of this number। so make clear this and this, 3 3s are 9, 1 and 0 0, here 3 6, now 60, 6 1 61, 6 2 4 and 124, this will be more, so 6 1 will take 1 here and 1 here, this will be 61 9 39, so 39। now this is 1000, it is the smallest number, we cannot subtract 39 from 1000, that will be come down to 2 digit number, right, 3 digit number, so it is the smallest 4 digit number, if we subtract 39 from 1000 we'll get 3 digit number। so what we'll do, we'll multiply, this is 31, then we'll 1 add to this number, it will be 32, then multiply 32 and 32, 2 2 is 4, 3 2 is 6, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 4
12 and 10. 1024. So 1024 is the least number of 4 digits which is a perfect square, right? Now take one more example. What is the greatest number of 4 digits which is a perfect square? Greatest number of 4 digits is, suppose this is the, what is the greatest largest number of 4 digits? This is the largest number of 4 digits. Now find the square root of this number. This is 99. So 7, 8, 9, 9 ja 81 and 10, 10 ja 100. So 9, 9 ja 81 will take 9, 9 ja 81, 8 and 1, 18, 18 and this 2 9 will come here, right? So 1, 8, if I take 1, 8, one more number, 1, 8 and 5 say, 5, 5 are 25, carry 2, 42, carry 4, 5 and 4, 9, right? 1, 8, 8 and 8, 1, 8, 8 is 64, carry 6, 64 and 6, 70, carry 7, 8, 1, 8 and 7, 15, 1, 8, 9 and 9, 9, 9 is 81, carry 8, 72 and 8, 80, carry 8, 9, 1 is 17, 1701. So we'll take 9 here and 9 here. Now we'll put 1701 here and subtract it, 8 and 9 and 198. So if I subtract this 198 from 9999, 198, this will be 1, this will be 0, this will be 8 and this will be 8. 9801. This will be your largest 4-digit number which is a perfect square, right? So these two examples, these two questions are very important. Remember this, how to calculate and how to find out perfect square of least 4-digit number, least and the largest 4-digit number, or 5-digit number, 6-digit number, or any number, what they ask. Now come to some properties of the square root. If you square a even number, say it is a 4, you will get a even number. Take one example, 8 square, 64. So if you square the given number, you will always get a even number. And if you square a odd number, you will get always a odd number, right? So these two are the properties. And the third property, consecutive numbers. Suppose these two are consecutive numbers, 7 square minus 6 square. How will you find this? 7 square minus 6 square. What will be the answer? So no need to square these two numbers. It is a simple formula. You will just add these two numbers, you will get the answer. Right? This is the property. And one more example, if I take 11 square and 12 square. If I say how many non-square number, non-perfect square numbers are between 11 square and 12 square. How will you find that? Example rule is 2 into the smaller of 2. And 2 into n means a smaller number. That means n square and n plus 1 square, right? So formula is 2 into 1. So the number is 2 into 11, that is 22 number are there in between 11 square and 12 square. 121, 11 square is 121 and this is 144. So 22 numbers are there in between these two numbers. So these are the formula. One more formula I like to tell you. This is also important. How will you find the sum of, this is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. What will be the sum of this number? Will you add these numbers? No. The rule is to simply add these two numbers. 1, 2, count it. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. These are 7 numbers. So 7 square, that means 49 is the total of this number. No need to add, right? So these are the some basic rules and the formulas you must know while you are solving the questions of square root. Now one more question comes in the square root, that is Pythagorean triplet. Pythagorean triplet says that suppose the number is, we know the Pythagoras theorem. So this is the Pythagoras theorem, this is hypotenuse, this is perpendicular, this is base. So h square is equals to p square plus a square, right? So if it is, the number is 3, 4 and 5, then this is the largest number. If I square this number, if this is equals to the sum of square of the other two number, that means 9 plus 16 is 65, 25 and 5 square is 25. If it is comes to, then these 3, 4, 5 are Pythagorean triplet, right? So these are the some basic rules and the formulas and the ways of solving square root problems. Now come to cube root. This is the, in some books, in some classes or some syllabus, square root and cube roots are two different chapters. But I like to tell you, square root is, cube root is more important, more easy. If I say cube root is, first you have to remember cube of 1 to 10 cube, 1 cube to 10 cube, and cube also like square. How you find? Suppose this is 81. Find the square root 3, 27, 3, 9, 3, 3. No? Suppose one more example, 125, 5, 25, 5, 5. So 125 is equals to 5 into 5 into 5. If I take, this is the way of writing cube root. So if I say this 555, the cube root of 125 is 5. So here in cube roots, we just have to take three numbers in common. So this will be your cube root. Simply, this is very simple as it is. So these two are chapters, very important chapters, square roots and cube roots. I suppose it may help you to find out solve the questions of square root and cube roots. All the best. Next class I will come with more each chapter, more important chapter. Thank you very much.